Today is crying. Somebody know somebody, yes. आज आज बापू वाला दिन है, कुछ बापू वाला करते हैं। गांधी जी Okay. Yes. born. पर नहीं बाल तो दसना नहीं में ऐसा कटते नहीं ना। करना है। दसना सोरठिया देख लिया मैंने आपको, डोंट वरी। जाएंगे आपके साथ भी कोई दिन। कौन? चलो फास्ट फास्ट, वी हैव लेस टाइम प्लीज। तू कुछ करवा रहा है जिग्नेश? नो नो, आस्क टू पार्टिसिपेंट। जिग्नेश सर, आज बापू वाला दिन है। बापू हर हमेशा ट्रू बोलते थे और हिंसा के खिलाफ यानी कि शांति की बात करते थे। तो हम प्रतिज्ञा आज लेते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, मदद करेंगे और अशांति नहीं फैलाएंगे। ऐसा कुछ करे तो So we can keep the bond for 2 minutes. ये इंग्लिश क्लब से ये कर सकते हैं आज के दिन। तो आज के दिन ये कर सकते हैं कि हम इतना कमिटमेंट दे के रेगुलर होमवर्क करेंगे और रेगुलर पार्टिसिपेंट करेंगे। Yes sir. Yes sir. यस रेज हैंड करो। 97 के 7 रेज हैंड होने ऐसे चाहिए। ऐसे रेंज करो, ऐसे फिजिकल करो। फिजिकल करो। चलो, हाँ, कौन प्रॉमिस कर रहा है आज गांधी और बोलना जयंती है, पे? साथ में बोलना है। मैं करूंगी रेगुलर होमवर्क। I can. हम रेगुलर होमवर्क करेंगे, क्लास अटेंड करेंगे। इंग्लिश Yes, yes, I do in regularly point class in regularly in my homework is completed. ओके, बापू देख रहे हो, झूठ मत बोलना। और मैं ट्रूथ बोल रहा हूँ, मैं असत्य नहीं बोल रहा हूँ और मैं करके दिखाऊंगा, ऐसा सब बोल वाह रहे वाह हैं। वाह वाह वाह। चलो, सबका प्रॉमिस है, अब से वो रेगुलर पार्टिसिपेंट करेंगे, उनको कोई कारण नहीं रोकेगा। राइट? रेगुलर Yes, होमवर्क sir. करने के लिए और पार्टिसिपेंट करने के लिए। सर मेरी एग्जाम है ना, तो मैं होमवर्क नहीं कर पाती हूँ। ओके, हाँ, आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। सबका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तो करोगे ना? ओके। उसने आज बापू वाला दिन किया, वो सच सच बता दिया उसने। सही है ना, गुड गुड गुड। ओके, तो इट्स 7:01। तो मैं आप सबको रोक रहा हूँ और गुड मॉर्निंग। आप सभी का इंग्लिश क्लब में हार्दिक स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू। So I'm inviting to today's leader in today revision class. So lead by Jayesh Golakia. Welcome Jayesh. Over to you. थैंक यू अजय एंड वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे आप सभी को आज गांधी जयंती है, तो हम हमारे प्यारे बापू को याद करके गांधी जयंती की आप सभी को शुभकामना। और इसी के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। ओके, सो एज यू नो एवरी सैटरडे वी आर गोइंग टू रिवाइज होल दी topics which we have already learned in this week. So આજે પણ આપણે એ રિવાઇઝ કરીશું. So before that let me share the PPT first. Just a second. Okay. Are you share the PPT? Yes. Okay. It's okay. So I think it's a Jayesh, sorry for interrupt you. Rakesh is there. yes, and yes, I know. Yes, I know. So let's move ahead. Okay, welcome note.
you should always follow this welcome note. आपको ये welcome note follow करनी है. What is our intention? Our intention is to empower every individual by teaching him or her English. That is English Club's intention, and to fulfill that intention, you should always keep in mind that why should I want to learn English? मुझे क्यों इंग्लिश सीखना है, वो आपको याद रखना है. और आप सभी को गांधी जयंती की खूब खूब शुभकामनाएं. राकेश सर भी हमारे साथ है, तो हम क्लास स्टार्ट करें इससे पहले राकेश सर से हम कहेंगे कि बापू के बारे में, या तो हमें कुछ भी, आज गांधी जयंती है तो बापू के बारे में हमें 5 मिनट कुछ बात करेंगे. राकेश सर, ओवर टू यू. थैंक यू. गुड मॉर्निंग. एक्चुअली 5 तारीख तक और खास तो 3 तारीख तक थोड़ा काम है तो कम ज्वाइन हो पाता हूँ. मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? यस यस सर. ओके. तो सबसे पहले आप सबको गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं. मुझे 5 मिनट में अगर या फिर 2-3 मिनट में अगर बापू के ऊपर बोलना है तो ये बहुत नाइंसाफी है एक्चुअली, क्योंकि ये वही बात होगी, फिर वो हम पूरे समंदर को हम छोटी सी उंगली से अगर नापने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा. लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात कही थी, वो अक्सर मुझे याद आती है, आप सबने भी पढ़ी होगी. उन्होंने ऐसा कहा था कि आने वाली जो पीढ़ियां है, नेक्स्ट जनरेशन है, वो शायद ही यकीन कर पाएगी कि मतलब हाथ पांव और हम बोलते हैं ना मांस लोही मतलब खून, इन सब से बना हुआ एक ऐसा इंसान इस धरती पर पैदा हुआ था और उसने इसी धरती पर मतलब जन्म लिया था. मतलब वो बापू के बारे में बोल रहे थे कि आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ियां, वो कम यकीन कर पाएगी कि ऐसा इंसान भी हो सकता है. तो बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन हमको कई बार क्या लगता है कि जब हमारे मन में पहली चीज आती है महात्मा गांधी, तो हमें सिर्फ एक ही चीज याद आती है कि वो फ्रीडम स्ट्रगल, कि भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी. वो वही उनकी एक पहचान बनी है. और दूसरी अभी अभी फिलहाल पिछले 5-7 सालों में एक पहचान बनी है कि गांधी जी मतलब स्वच्छता. तो ये एक्चुअली एक पूरे समंदर का एक छोटा सा हिस्सा है, छोटी सी बूंद है, जो ये 2 चीज है ना, वो हमको यही लगता है. ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता संग्राम में ही उनके जीवन का हिस्सा था. ये सिर्फ हमने उनको जब ठीक से या डीप से नहीं पढ़ा है, इसीलिए ये हो रहा है. एक्चुअली आप सबको मैं आज बताना चाहूंगा कि अगर आपको जानना है कि रियल बापू कौन थे, तो आपको उनके डे टू डे लाइफ में जो महात्मा गांधी है ना, वो महात्मा गांधी रियल महात्मा गांधी है. हमने देखा होगा कि हम यहाँ बार बार इंटीग्रिटी की बात करते हैं, सब चीजें, कई चीजों की बात करते हैं. और अगर महात्मा गांधी बापू जैसा कमिटमेंट अगर हमारे पास आ जाए, तो हम जो फील्ड में, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं, स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी में नंबर 1 हो सकते हैं, XYZ आप स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स में नंबर 1 हो सकते हैं. इसलिए महात्मा गांधी जो है सिर्फ सेवा के या समर्पण के क्षेत्र का हीरो नहीं है. आप उनके प्रिंसिपल ईच एंड एवरी, हर एक चीज में अप्लाई कर सकते हैं, हर एक फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं. ऐसा कहा जाता है कि कई बापू को मिलने के लिए बहुत सारे लोग आया करते थे, तो वो 2 या 3 मिनट में सामने वाले को उसका क्वेरी भी रिजॉल्व कर देते हैं और वो हंसते हंसते बाहर जाता था. कई बार कई कुछ लोगों ने पूछा कि बाहर जब आते थे लोग, तो बोले कि आप 2-3 घंटे लाइन में खड़े रहे और 2 मिनट में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया. बोला हाँ, मुझे सब कुछ जो उन्होंने कहना था वो 2 मिनट में कह भी दिया और मुझे समझ भी आ गया. बोला ऐसा क्या है, मतलब क्यों, ऐसा क्यों होता था? तो हमने कई बार वो देखा है ना कि लिसनिंग, सुनने की जो प्रक्रिया होती है लिसनिंग, तो बापू की जो लिसनिंग की प्रक्रिया थी वो ऐसी थी कि वो किसी को छोटा बड़ा गुण दोष ऐसा नहीं देखते थे. वो अगर आपको सुन रहे हैं तो अपने 100% उससे सुन रहे हैं. कहते हैं ना, हम किसी को सुनते हैं, अगर दिल से सुनते हैं
तो उसको ऑटोमेटिक जो मिलना होता है वो मिल जाता है। तो अगर वो 5 साल का बच्चा है तो भी उसको इतने इंटीग्रिटी से सुनते हैं, उतना से लिसनिंग देते थे। और 90 साल का है, इंडिया का वाइसरॉय है, भारत का बादशाह है, तो भी उसको वही लिसनिंग देते। दूसरी चीज, वो किसी को छोटा या बड़ा नहीं, जो मैंने ये था, किसी को छोटा किसी को बड़ा ऐसा कुछ नहीं, उनके लिए सब समान। उनकी वाइसरॉय के साथ मीटिंग होती थी, मतलब वाइसरॉय मतलब भारत का राजा उस समय। तो उस टाइम भी उनको जो मतलब मीटिंग है और अगर 11 बज गए और उनके खाने का टाइम हो गया तो वाइसरॉय को बोल देते थे, सर मेरे खाने का टाइम हो गया है। मतलब जो चीज जहाँ पे जिस वक्त करनी है वो करनी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। एक एक चीज में उनके एक्सपेरिमेंट है, हेल्थ के ऊपर एक्सपेरिमेंट है, पढ़ाई लिखाई के। जिस दिन उनकी जिंदगी का लास्ट दिन था, हम इंग्लिश क्लब में इसलिए बता रहा हूँ कि सीखने की भी कोई उम्र नहीं होती। जिस दिन वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बंगाली सीखा करते थे। तो बांग्ला बोलते हैं ना, बांग्ला, वो तो जिस दिन उनका जिंदगी का आखिरी दिन था, जिस दिन उनको गोली मारी गई, उस दिन भी सुबह उनका बांग्ला का पाठ था। रोज सुबह 1 घंटा सीखना है, मतलब सीखना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। छोटी सी बात कह के, क्योंकि हमें आगे भी क्लब का जो भी काम है वो बढ़ाना है। नारायण भाई देसाई करके गांधी जी के जो सेक्रेटरी थे, और उनका सन गांधी जी के साथ महादेव भाई देसाई करके थे उनके सेक्रेटरी। उनके बेटे थे नारायण भाई देसाई। उन्होंने पूरे भारत में और विश्व में गांधी कथाएं बहुत सारी की। तो एक बार वे एक्वाडोर, अपने लेटिन अमेरिका का एक कंट्री है, वहां पे वो ऐसी इसी तरह गांधी कथा कह रहे थे। वहां किसी को इंग्लिश नहीं समझ में आती, तो वहां उन्होंने ऐसा सिस्टम सेट किया था। ये अभी की बात है, 5-7 साल पहले की, बहुत दूर की बात नहीं। उन्होंने वहां ऐसा सिस्टम सेट किया था कि वो वहां से बोलेंगे इंग्लिश में, और कोई कंपाइलर जो लैंग्वेज कन्वर्ट करने वाला होता है, वो स्पेनिश में कन्वर्ट करके सबको सुनाएगा, क्योंकि वहां किसी को इंग्लिश नहीं आती थी, वहां स्पेनिश बोली जाती है। तो जब वो कथा खत्म होती है तो एक बुजुर्ग आते हैं, और जो ये कथा बोलने वाले, जो कथा कह रहे थे, वो नारायण भाई देसाई। सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती है और नारायण भाई को स्पेनिश नहीं आती है, फिर भी वो उनका हाथ पकड़ लेता है, और थैंक यू, बस उसको और कुछ नहीं आता, बोला थैंक यू। क्यों? थैंक यू थैंक यू थैंक यू 7-8 बार बोला। उनको कुछ समझ में नहीं आया कि ये मेरा हाथ छोड़ क्यों नहीं रहा है। तो उन्होंने किसी को बुलाया, नारायण भाई ने, कि भाई बताइए ना ये क्या है। तो जो जिसको स्पेनिश आती थी, उन्होंने ऐसा बोला कि आपने कथा के अंदर एक बात बोली थी कि जब आप छोटे थे तब बापू जो थे वो आपके कंधे पर हाथ रखकर घूमने जाया करते थे। तो ये जो भाई है वो ऐसा बोल रहे हो, जो बुजुर्ग है वो, कि अगर गांधी जी आपके कंधों पर घूमने जाया करते थे हाथ रखकर, तो मैं आपके हाथ को छूकर उनके वाइब्रेशन लेना चाहता हूँ। अब ऐसा एक देश है जहाँ पे इंग्लिश के अलावा इंग्लिश भी नहीं आती है किसी को, राइट। और गांधी बापू या फिर महात्मा गांधी के जन्म के 60-70 साल के बाद की ये बात, वहां एक बुजुर्ग ऐसा बोल रहा है कि गांधी बापू अगर आपके कंधे पर हाथ रखकर घूमने जाया करते थे, तो उस हाथ को छूकर मैं उनके वाइब्रेशन लेना चाहता हूँ। ये है बापू की चेतना, ये है उनका विस्तार। बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पढ़िए उनको। आपने आपको अगर वो सुपरमैन की कहानियां अच्छी लगती है, हमको फिक्शन ज्यादा अच्छे लगते हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आप एक बार पढ़ना शुरू करिए। आपको अगर वो सुपरमैन ना लगे तो आप जो बोले वो मैं हार जाऊं। ही वॉज रियल सुपरमैन। सुपरमैन को हमको फिक्शन लगता है कि ठीक है, हमको भी पता होता है कि ये सच नहीं होता, लेकिन आप बापू को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको रियल में एहसास होगा कि वॉज रियली सुपरमैन। मैं फ्रीडम स्ट्रगल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, दूसरे फील्ड की ही बात कर रहा हूँ। डे टू डे लाइफ में आदमी कितना एक 24 घंटे में आदमी कितना काम कर सकता है, कितने अच्छे तरीके से कर सकता है, ये आपको उनकी जिंदगी के एक एक पेज पे देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राकेश सर, आपने बहुत अच्छी चीज़ बापू के बारे में बताई, और डेफिनेटली सब बापू के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ेंगे आज से कुछ ना कुछ तो बापू के बारे में बिल्कुल पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। टुडेज टॉपिक, मॉडल वर्ब वुड
और शुड और कुड का भी हम साथ में रिवीजन करेंगे। सो लेट्स सी, सबसे पहले यूज देख लेते हैं एक बार फिर से। जो को भी लगता था कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं, उससे सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने यूट्यूब पे जाके वीडियो लेक्चर फिर से देखा है। अपना हैंड रेज करिए, पूरा वीडियो लेक्चर, सिर्फ 5 मिनट 2 मिनट के लिए नहीं, पूरा वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे जाके पूरे का पूरा वीडियो लेक्चर कल का देखा है। कितने लोगों ने यूट्यूब पर देखा है? लेट मी सी द पार्टिसिपेंट्स। ओके ओके, सो 13 ऑलमोस्ट 10 participants. लोगों ने, 13 13. ओके, Yes. 13 पार्टिसिपेंट। देखो, मोर देन 111 पार्टिसिपेंट्स में से सिर्फ 13 लोगों ने देखा है, 12 लोगों ने देखा है। और फिर आपको लगता है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज है ना, वो जर्नी है, वो रातों रात आप नहीं सीख पाओगे। यहाँ से ऐसा कोई भी जादू मंत्र यहाँ से आपको नहीं दिया जाएगा कि आप एक दिन में सीख पाओगे। आपको प्रैक्टिस साथ में करनी पड़ेगी। मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत प्रैक्टिस करता हूँ मैं आपके सामने क्लास लेने से पहले। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको लगेगा, ये इसलिए लगता है मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है कहाँ है क्या यूज करें। मैंने आपको बोला था कि आपको 2 बार देखना है। सिर्फ ये पूरे 111 लोग में से सिर्फ 12 और 13 लोगों ने वीडियो देखा, और फिर आप बोल रहे हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। इंग्लिश है वो ये कोई सम, मैथमेटिक्स का सम नहीं है, ગણિતનો કોઈ દાખલો નથી કે હું અહીંથી તમને કહી દઉં 1 + 1 એટલે 2 સીધું, કે કોઈ દાખલો એક જ તમને પેલું આપી દઉં, સૂત્ર આપી દઉં અને તમે એના હિસાબે ગણી શકો। જ્યાં સુધી તમે પ્રેક્ટિસ નહીં કરો ત્યાં સુધી તમે નહીં શીખી શકો। લેંગ્વેજ, કોઈ પણ લેંગ્વેજ શીખવી હોય તો એના માટે સૌથી જરૂરી છે પ્રેક્ટિસ। એટલે હજી તમારી પાસે ઘણો બધો સમય છે। જો પ્રેક્ટિસ ચાલુ નહીં કરો તો આ બેચ પૂરી પણ થઈ જશે અને તમને કદાચ એવું લાગશે કે હું જ્યાં છું ત્યાંનો ત્યાં જ છું। એટલે અહીંયાથી જે પણ કહેવામાં આવે એનું તમે પ્લીઝ आप उसका पालन करोगे ऐसी मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ। हम फटाफट से देख लेते फिर से एक बार। कई पार्टिसिपेंट्स को वर्ड में थोड़ा कंफ्यूज हुआ तो आपको बहुत सिंपल वे से आज मैं आपको बताऊंगा। इतनी जगह पे हम वुड का यूज कर सकते हैं, एटली जगह पर हमें वुड नो यूज करी શકીએ। एक तो इन प्लेस ऑफ वॉन्ट, इन प्लेस ऑफ वॉन्ट मतलब वॉन्ट ની જગ્યાએ રિક્વેસ્ટ કરવા માટે, ઓફર કરવા માટે, પાસ્ટ ઓફ વિલ, વિલ નું પાસ્ટ બતાવવાનું છે ત્યારે, પાસ્ટ હેબિટ ભૂતકાળની કોઈ ક્રિયા, અને કંડિશનલ સેન્ટેન્સ, કંડિશનલ સેન્ટેન્સ મતલબ જોતો વાળા, કે જો આમ થયું હોત તો આમ થયું હોત, પરિણામ આવું આવ્યું હોત, એટલે જોતો વાળા। એટલી જગ્યા પર हम will નો યુઝ કરી શકીએ। हम 1 by 1 देख लेते हैं फटाफट। इन प्लेस ऑफ want, want એટલે ઈચ્છવું, ચાહવું। હું એમ કહું કે હું અમેરિકા જવા ઈચ્છું છું તો आई want to go to America। यहाँ सेंटेंस लिखा है आई want to drink some coffee, હું કોફી પીવા ઈચ્છું છું તો ખાલી आई want to drink some coffee, હું કોફી પીવા ઈચ્છું છું એવું। પણ ઇન પ્લેસ ઓફ વોન્ટ ની જગ્યા પર તમે એવું વોન્ટ લાઈક, સોરી વુડ લાઈક પર યુઝ કરી શકો। જैसे आई वुड लाइक टू ड्रिंक सम कॉफी, મને થોડી કોફી પીવી ગમશે। તો વોન્ટ ની જગ્યા પર તમે વુડ લાઈક યુઝ કરી શકો। जैसे બીજું એક્ઝામ્પલ છે आई वांट टू गो टू द यूएसए, હું યુએસએ જવા ઈચ્છું છું તો आई वुड लाइक टू गो टू द यूएसए, મને યુએસએ જવું ગમશે। आई वांट टू बी अ डॉक्टर, હું ડોક્ટર બનવા ઈચ્છું છું। आई वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर, મને ડોક્ટર બનવું ગમશે। तो ये want ની જગ્યા પર તમે would यूज કરી શકો, would like। तो आपकी जिंदगी में ऐसा क्या want है, आप क्या इच्छते हो? सो अजय, लेट्स आस्क समवन, वो आपको बताना है कि आई वांट टू बी डॉक्टर, आई वांट टू गो टू दी केरला, व्हाटएवर इट कुड बी। आपको एग्जांपल देना है। सबसे पहले एक वांट बोल के फिर वुड लाइक बोल के कि आपकी क्या चाहत है, તમારી શું ઈચ્છા છે, શું લાઈક વાન્ટ છે તમારું। યસ, Anybody also in chat? Okay. Brinsi Akbari. Yes, Brinsi. યસ બ્રિન્શી। Mayank Kalsaria. અજય, can you share the PPT? Which PPT?
या प्रिंसी, देखो आपको लिखना है आपकी क्या चाहत है। आई वुड लाइक टू बी एन एडवोकेट, મને એડવોકેટ બનવું ગમશે। મારી કઈ ચાહત હોય કે હું ગોવા જવા માંગુ છું, તો आई वांट टू गो टू गोवा। तो आप वुड का यूज करके बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू गो टू गोवा, મને ગોવા જવું ગમશે। यस अजय, would you please Yes, sir. unmute someone? Yes, Nisarg. Parul Dudrat. Yes, sir. Yes, Parul. I want to shopping in DMart. I want to shopping नहीं होगा। I want to buy something from DMart. DMart. Okay, so अब आप would कैसे यूज कंपल्सरी करोगे? टू पाछળ આવે ને टू પછી હંમેશા ટુ ક્રિયાપદ कंपल्सरी નું પાછળ રૂપ આવે હોય। ને ટુ પછી હંમેશા ક્રિયાપદ નું મૂળ રૂપ હોય, તો I want to buy something from DMart. હું DMart માંથી કંઈક ખરીદવા ઈચ્છું છું। તો હવે would નો यूज કરવો હોય તો કઈ રીતના यूज કરશો? I would like by DMart. I would like नहीं, I would like to To सेंटेंस सेम રહેશે। I would like to buy something from DMart. समथिंग मतलब કંઈક, હું ડીમાર્ટ માંથી કંઈક ખરીદવું મને ગમશે। I would like to buy something from DMart. Yes, Braj. Mittal Gohil. I have unmuted Vyaj. Okay. Okay. Okay, let's give chance to Mittal Gohil. Yes, Mittal. I want to UI and UX designer. I want to UI and UX designer. I am not getting your voice clearly, Mittal. Mittal? Yes. Yes, could you repeat the sentence again? I want to UI and UX designer. यूएस डिजाइनर, इतना मुझे समझ में आया। इससे आगे आप क्या बोल रहे हो? आई वांट टू UI यूआई मतलब वो डिजाइनिंग का आता है ना वो। यूआई क्या नाम है? हाँ UI आई वांट टू यूआई एंड UX designer. यूएक्स डिजाइनर। तो आप वो बनना चाहते हो? Yes. तो आई वांट टू बी यूआई एंड यूएक्स डिजाइनर। यूआई क्या है मुझे नहीं पता है, पर आप जो बनना चाहते हो, तो आई वांट टू बी, मैं ये बनना चाहता हूँ। अब इसकी जगह पे आपको वुड लाइक यूज करना है, तो कैसे यूज करोगे? I would like to बी, बी એટલે બનવું, એટલે I would like to be UI and UX designer. yes, I would like to be UI and UX designer. देखो यहाँ सेंटेंस में भी I want to be a doctor, મને ડોક્ટર બનવું ગમશે, but I would like to be a, sorry, I want to be a doctor, હું ડોક્ટર બનવાનું ઈચ્છું છું, but I would like to be a doctor, મને ડોક્ટર બનવું ગમશે। તો would like हो गया यहाँ। तो एक तो in place of want we can use would like। सेकंड है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हमने देखा था, रिक्वेस्ट हम कैन से भी कर सकते हैं, कुड से भी कर सकते हैं, और वुड से भी कर सकते हैं, और विल से भी कर सकते हैं। मैं अगर बोलूं विल यू प्लीज पास दैट पेन टू मी, क्या आप वो पेन मेरे तरफ पास करोगे? विल से मैंने पूछा, पर आपको इससे भी ज्यादा पोलाइटली करना है तो आप वुड से रिक्वेस्ट करोगे। वुड यू प्लीज पास दैट पेन टू मी, क्या आप वो पेन मेरे तरफ पास करोगे? तो पोलाइट रिक्वेस्ट हो गई। विल थी करो तो इनफॉर्मल वे થઈ ગયું કે આપણી સરખી ઉંમરના હોય, આપણીથી નાની ઉંમરના હોય, એની સાથે તમે વિલ થી પણ કહી શકો। તમારા ફ્રેન્ડ હોય, ફેમિલી મેમ્બર હોય, એને વિલ થી રિક્વેસ્ટ કરી શકો। પરંતુ તમારાથી કોઈ મોટી ઉંમરના છે, ફોર્મલ વે થી કહેવાનું છે, ઔપચારિક રીતે કહેવાનું છે। તમારા કોઈ ટીચર્સ છે ત્યારે તમે શું કહેશો? ત્યારે આપણે નાના સાથે જે સંબોધન કરતા હોય એ મોટા સાથે સંબોધન ન કરીએ ને, એને આપણે રિક્વેસ્ટ થી કહેવું પડે। તો પોલાઇટ રિક્વેस्ट मतलब एकदम हम्बली रिक्वेस्ट थी, वुड यू प्लीज पास दैट पेन टू मी, શું તમે એ પેન મારી તરફ પાસ કરશો? जब वुड से भी और पोलाइट
पोलाइटनेस से रिक्वेस्ट करनी है तब आप कुड से रिक्वेस्ट करोगे। कुड वुड से भी ज्यादा पोलाइटनेस, पूरा ऐसा झुक के, वुड यू प्लीज पास दैट पेन टू मी, શું તમે એ पेन મારી तरफ पास करशो। तो वुड से भी ज्यादा पोलाइटनेस कुड में है। तो हमें ऑलवेज किसी से भी कुछ रिक्वेस्ट करनी है तो कुड से हम क्वेश्चन पूछेंगे। और यू कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चन, यू कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट others with use of would you please pass that pen, would you please help me, શું તમે મારી મદદ કરશો। यहाँ इससे भी ज्यादा पोलाइटनेस है तो would you please help me, would you please open the window, would you please bring chair to me, શું તમે મારા માટે ચેર લાવશો। आप कहीं शादी में गए हो और आपके हाथ में खाने की प्लेट है, आपको चेयर चाहिए तो आप किसी को रिक्वेस्ट करोगे। अगर आपकी एज का है, सेम एज का है, आपसे छोटा है तो आप बोलोगे विल यू प्लीज ब्रिंग अ चेयर फॉर मी, શું તું મારા માટે ચેર લાવીશ। પણ अगर आपसे बड़ा है कोई और आपको बहुत पोलाइटनेस से कहना है, आपसे छोटा है तो भी आपको पोलाइटनेस से कहना है, तो आप बोलोगे वुड यू प्लीज ब्रिंग चेयर फॉर मी, वुड यू प्लीज मेक कॉफी फॉर अस, શું તમે અમારા માટે કોફી બનાવશો, वुड यू प्लीज कम विथ अस, શું તમે અમારા માટે અમારા સાથે આવશો। तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हो गया वुड का यूज। थर्ड देख लेते हैं, फॉर ऑफरिंग समथिंग, मतलब કંઈક ઓફર કરવું, જેમ કે વુડ યુ લાઈક સમ ટી, શું તમને ચા ગમશે, અથવા વુડ યુ લાઈક ટુ ટેક સમ ટી, શું તમને ચા પીવી ગમશે। વોટ વુડ યુ લાઈક ટુ હેવ ઇન ડિનર, તમને ડિનરમાં શું લેવું ગમશે। વોટ વુડ યુ ટેક ફ્રોમ હિયર, તમે અહીંથી શું લઈને જશો। would you like to earn money through blogging, શું બ્લોગિંગ દ્વારા પૈસા કમાવા તમને ગમશે। તો આ શું થયું, બધું ઓફર કરી તમને। now it is up to you whether you want to choice or you can reject it too, તમે એને રિજેક્ટ પણ કરી શકો છો, પણ એ ઓફર કરી સામેવાળા વ્યક્તિએ। ત્યારે તમારે જ્યારે કોઈને ઓફર કરી હોય કંઈ, ત્યારે તમે કઈ રીતના પ્રશ્ન પૂછશો, વુડ થી, would you like to take some tea, શું તમને ચા પીવી ગમશે। what would you like to have in dinner, તમને ડિનરમાં શું લેવું ગમશે। तो आप कहाँ ऐसे ऑफर करोगे किसी को would का यूज करके। लेट्स अनम्यूट समवन एल्स। अजय, आप कैसे ऐसे ऑफर करोगे किसी को। ओके, तो ब्रिंसी अकबरी, यस ब्रिंसी। क्या ब्रिंसी, अगर आपको कुछ ऑफर करना है। मनसा से D151। रश्मिता, यस आपको रश्मिता। म्यूट नहीं दबाना है, यहाँ से हम लोग नाम बोले तो आप ऑलरेडी अनम्यूट ही हो, आपको सिर्फ बोलना है, आपकी बात खत्म होने के बाद आप म्यूट करना है। यस 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 रश्मिता। Would you like to play with me? ओके, आपने ये देखो, ये आप पूछ रहे हो કે શું તમને મારી સાથે રમવું ગમશે, તો ये नेक्स्ट हो गया, ये ऑफर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट हम वही प्रीवियस में हमने देखा या नेक्स्ट में, या ये रिक्वेस्ट हो गई। प्रीवियस स्लाइड में देखा ना पोलाइट रिक्वेस्ट के શું તમને મારી સાથે રમવું ગમશે, would you like to play with me, वो तो रिक्वेस्ट हो गया। आपको ऑफर करना है, ऑफर देना है। यहाँ कैसा है, ऑफर दिया, તમને ચા પીવી ગમશે, તમને લંચમાં ડિનરમાં શું લેવું ગમશે, તમે અહીંથી શું લઈને જશો। तो आपको कुछ ऑफर करना है, तब आप वुड यूज करना है। आपने जो किया सही है, वुड यू लाइक टू प्ले विथ मी, पर वो रिक्वेस्ट किया, पोलाइट रिक्वेस्ट। यस पूनम। पूनम, ओके, एक और एग्जांपल, जैसे मैं ऑफर के, यस हेलो, यस यस, योर वॉइस इज ऑडिबल। तुम अगर क्या आपको मेरे सामने, साथ घूमने चलोगे। वो भी क्या हेलो। हो गया, हाँ, तुम क्या मेरे साथ घूमने चलोगे, तो वो ऑफर भी हो सकता है, वो रिक्वेस्ट भी हो सकता है। ऑफर में भी आपने ऑफर की, अब वो सामने वाला पर डिपेंड करता है कि उसको आना है या नहीं आना है। तो उसको आप कैसे बोलोगे। Would you go for a walk with me? Would you
Go Would for you a like walk to with go? me. Would you like to Like, go? सॉरी, आपका क्या सेंटेंस था? तुम क्या मेरे साथ घूमने चलोगे? ओके, तुम क्या मेरे साथ घूमने चलोगे? तो वो Yeah. कैसे बनेगा वो? Would you go for a walk with me? Would you go for? Walk with me. Would you go for walk with me? इसमें छोटा सा करेक्शन है, ऐसे नहीं होगा. तुम क्या मेरे साथ घूमने चलोगे? શું તમે મારે સાથે ફરવા આવશો? તો would you like to wander with me? Would you like to go outside with me? શું તમને મારી સાથે બહાર જવું ગમશે? Would you like to go outside with me? Would you like to go on long drive with me? શું તમને મારી સાથે long drive માં આવવું ગમશે? પૂનમ, Okay. Thank you. કરેક્ટ હુઆ? Would you like to go on long drive with me? શું તમને મારી સાથે long drive માં જવું ગમશે? Would you like to go outside with me? શું તમને મારી સાથે બહાર જવું ગમશે? Would you like to roam with me? શું તમને મારી સાથે ફરવું ગમશે? तो ये हो गया ऑफरिंग समथिंग. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम पास्ट ऑफ विल. जैसे मैं बोलूं इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया. पर अब ये विल का पास्ट कब होगा? अब मैं ऐसे बोलूं कि મને પહેલેથી ખબર હતી કે આજ વરસાદ પડશે, તો હું ભૂતકાળની વાત કરું છું. મને ખબર હતી કે વરસાદ પડશે. ભૂતકાળમાં કેની આપણે વાત કરી? ભવિષ્યકાળની, કે વરસાદ પડશે. તો ભૂતકાળ અહીંયા થયો આઈ ઓલરેડી હેવ એન આઈડિયા કહું તો વર્તમાન થાય, પણ ભૂતકાળ એટલે હેવ નું થઈ ગયું હેડ. આઈ હેડ ઓલરેડી એન આઈડિયા. મને પહેલેથી ખબર હતી કે ધેટ આજે વરસાદ પડશે. તો આ જે ભૂતકાળ છે તો વિલ નું ભૂતકાળનું રૂપ થઈ જશે વુડ. ઇટ વુડ રેન ટુડે. મને ખબર હતી કે આજે વરસાદ પડશે. રાજેશ્વરી વિલ ગો ટુ ધ માર્કેટ ફોર બાઇંગ વેજીટેબલ્સ. રાજેશ્વરી શાકભાજી લેવા માટે માર્કેટમાં જશે. તો એ સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ. પણ હવે આનું પાસ્ટમાં કે રાજેશ્વરીએ મને કહ્યું હતું કે તે શાકભાજી લેવા માર્કેટમાં જશે. કહ્યું હતું મતલબ પાસ્ટ. તો પાસ્ટમાં જબ સેન્ટેન્સ થશે પાસ્ટમાં, તો વિલ નું પણ પાસ્ટ થઈ જશે કે રાજેશ્વરી said me that. રાજેશ્વરીએ મને કહ્યું હતું કે she would go to the market for buying vegetables. તે શાકભાજી ખરીદવા માટે માર્કેટમાં જશે. તો એ થઈ ગયું પાસ્ટ ઓફ વિલ. અ પાસ્ટ હેબિટ, તમારી ભૂતકાળની કઈ હેબિટ હોય અથવા રોજિંદી ક્રિયા હોય એ દર્શાવવા માટે પણ વુડ નો યુઝ થાય. ભૂતકાળની કોઈ હેબિટ મતલબ આદત હોય અથવા તો રોજિંદી ક્રિયા હોય, ભૂતકાળમાં તમે રોજે એ કરવા માટે ટેવાયેલા હતા, એવું દર્શાવવા માટે પણ વુડ નો યુઝ થાય. સૌ પ્રથમ જ્યારે તમે વાક્ય બોલવાની શરૂઆત કરો ત્યારે પહેલું વાક્ય વુડ ની જગ્યાએ યુઝડ ટુ પણ યુઝ કરી શકો. जैसे यहाँ लिखा है used to. देखो, when I was in college, જ્યારે હું કોલેજમાં હતો, I would wake up at 7 o'clock. હું 7 વાગ્યે ઉઠતો હતો. પહેલું વાક્ય છે ને ત્યારે would ની જગ્યાએ used to પણ યુઝ કરી શકો. I used to woke up at 7 o'clock. મેં 7 વાગે જાગવા માટે ટેવાયેલો હતો. used to મતલબ ટેવાયેલો હતો. પાસ્ટમાં ઈડી લાગેલું છે ને કે હું 7 વાગે જાગવા માટે ટેવાયેલો હતો, મતલબ 7 વાગે રેગ્યુલર ઉઠતો હતો. તો પહેલું તમે વુડ યા તો યુઝ ટુ પહેલામાં, પછી આ પૂરો પેરેગ્રાફ છે બધે યુઝ ટુ નહીં યુઝ કરોગે, એની પછી આપ વુડ જ યુઝ કરી શકશો. ધેન પછી શું કરતો? આ ટી ભૂલથી થઈ ગયો છે. આઈ વુડ ગો ટુ ધ જીમ. પછી હું જીમ જતો હતો. આ રેલી દેખો, ભૂતકાળમાં તમારી કોઈ રેગ્યુલર થતી ક્રિયા છે એટલે વુડ યુઝ થશે. Then I would go to the gym. પછી હું જીમ જતો હતો. Then I would enjoy a lot with my friend. પછી હું મારા મિત્રો સાથે આનંદ મતલબ એન્જોય કરતો હતો. Then I would go to the college. પછી હું કોલેજ જતો હતો. Then we would tease teachers in the college. પછી અમે કોલેજમાં શિક્ષકને ખીજવતા હતા. Then I would come back to my home. પછી હું ઘરે આવતો હતો. Then I would take some rest. પછી હું રેસ્ટ લેતો હતો. Then I would go to play cricket with my friend. પછી હું મારા મિત્રો સાથે ક્રિકેટ રમવા જતો હતો. તો બધે શું આવ્યું? વુડ. ભૂતકાળની કોઈ તમારી હેબિટ હોય, રેગ્યુલર થતી ક્રિયા હોય, અથવા તો ભૂતકાળનું કોઈ આદત હોય, તમારી ટેવ હોય, એ દર્શાવવા માટે વુડ નો યુઝ થાય. અહીંયા તમે એવું પણ મતલબ કહી શકો કે then I went to the gym. પછી હું જીમ ગયો હતો. પણ આ ક્યારે એવું થાય? જ્યારે કોઈ સ્પેસિફિક દિવસની વાત કરો. જ્યારે હું એમ કહું કે ગયા રવિવારે તમે શું કર્યું, ગયા રવિવાર તમારો ડિસ્ક્રાઇબ કરો,
તો વુડ ગયા રવિવારે સ્પેસિફિક ડે ની વાત કરો છો તો ત્યારે વુડ નહીં, ત્યારે તમે વેન્ટ યુઝ કરશો કે આઈ વોકઅપ ની જગ્યાએ આનું સેકન્ડ ફોર્મ યુઝ થશે. ગો ની જગ્યાએ then I went to the gym, then I enjoyed a lot with my friend, then I went to the college, then we teased teacher in the college, then I came back to my home, then I took some rest, then I went to play cricket with my friend. સ્પેસિફિક રવિવારની વાત છે, પણ પૂરી આદતની વાત છે કે તમે રેગ્યુલર આ કરવા ટેવાયેલા હતા ત્યારે વુડ યુઝ થશે. क्लियर? नेक्स्ट यूज जो है कंडीशनल सेंटेंस. कंडीशनल सेंटेंस के बारे में आगे और पढ़ेंगे. कंडीशनल सेंटेंस इसे बोलते हैं जिसमें दो क्लोज होते हैं. एक जो आम थયું હોત તો સંભવિત આવું રિઝલ્ટ આવ્યું હોત. જેમ કે if I had money, જો મારા પાસે પૈસા હોત તો I would help you, તો હું તમારી મદદ કરી હોત. જો મારા પાસે પૈસા હોત તો મેં તમારી મદદ કરી હોત. Yes, Shrija, do you have any question? No, sir. Okay. If I live in Australia, જો હું ઓસ્ટ્રેલિયામાં રહેતો હોત તો I would visit the ISKCON temple, મેં ISKCON temple ની મુલાકાત કરી હોત. તો મેં ISKCON temple ની મુલાકાત કરી હોત. If you came to meet me, જો તમે મને મળવા આવ્યા હોત, देखो इसमें सब में सिंपल पास्ट टेंस है. जो તમે મને મળવા આવ્યા હોત તો we would talk together, આપણે સાથે વાત કરી હોત. If you work hard, જો તમે સખત મહેનત કરી હોત તો you would get good marks in exam, તમે પરીક્ષામાં સારા માર્ક મળ્યા હોત. હોત ऐसा होत तो would यूज होता है. If I were there, जो હું ત્યાં હોત तो I would help him, तो હું એને મદદ કરે. ओके, अभी सेंटेंस में कहीं पे भी किसी को कुछ गलती लग रही है? कहीं पे भी किसी को कुछ भी गलत लग रहा है सेंटेंस में? यस शिल्पा. यस शिल्पा. હા, ચોથા સેન્ટેન્સ માં I નથી આવ્યું, you આવ્યું છે. You would get good. તો હા, you if you work hard, જો તમે સખત મહેનત કરી હોત તો તમે પરીક્ષામાં સારા માર્ક મળ્યા હોત. You would get a good marks, તમે સારા માર્ક મેળવ્યા હોત. તો રાઈટ છે. એના સિવાય યસ તરુણાબેન. આ છેલ્લા સેન્ટેન્સ માં વેર કેમ આવ્યું? If I were there. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. देखो અહીંયા વેર કેમ આવ્યું એ મેં ચાહતા હતા કે કોણ પૂછેગા એ, કે જ્યારે પણ આઈ સાથે તો વોઝ આવવું જોઈએ, પણ જ્યારે પણ કોઈ કંડિશનલ સેન્ટેન્સ હોય મતલબ જો વાળું ને તો વાળું, કે જો આમ થયું હોત તો આમ થાત એવું. કોઈ પણ કંડિશનલ સેન્ટેન્સમાં હંમેશા આઈ હોય, હી શી ઇટ હોય. હી શી ઇટ સાથે વોઝ વપરાય, કે યુ હોય, વી હોય, બધા સાથે વર જ યુઝ થશે કંડિશનલ સેન્ટેન્સમાં. એટલા માટે અહીંયા વર છે બધા જ માટે. જ્યારે પણ કોઈ કંડિશનલ સેન્ટેન્સ હોય છે, કંડિશનલ સેન્ટેન્સમાં આઈ સાથે કે હી શી ઇટ બધા જ સાથે વર જ યુઝ થશે. કે ઇફ આઈ વર ધેર, જો હું ત્યાં હોત તો આઈ વુડ હેલ્પ હિમ, તો હું એની મદદ કરે. જો હું ત્યાં હોત, આ પાસ્ટ નું થઈ ગયું ને એક પ્રકારે. તમે એમ પણ વર મતલબ પાસ્ટ ટેન્સ, તો પાસ્ટમાં હું એની મદદ કરે તો વિલ નું આઈ વિલ હેલ્પ હિમ, હું એની મદદ. અત્યારે મારે કેવું કે હું એની મદદ કરીશ, પણ પાસ્ટમાં કે હું એની મદદ કરે તો પાસ્ટમાં વિલ નું વુડ થઈ જાય. તો અહીંયા બધામાં જ એવું છે. યુ વર્ક હાર્ડ, તમે સખત મહેનત કરી હોત તો યુ વુડ ગેટ ગુડ માર્ક્સ, તમને સારા માર્ક મળ્યા હોત. ઇફ યુ કેમ ટુ મીટ મી, तो वी वुड टॉक टुगेदर. तो ये हो गया कंडीशनल सेंटेंस. नेक्स्ट है मॉडल परफेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब परफेक्ट, यहाँ एक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी. तो यहाँ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा. अभी तक देखो आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं था, यहाँ सिर्फ वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही है. वी वुड, किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज इसे म्यूट कर दीजिए. ओके. आई वुड विजिट द इस्कॉन टेम्पल, वी वुड टॉक, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही है. पर परफेक्ट ऑक्सिलरी में क्या होगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा. वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब एक्शन कंप्लीट થઈ ચૂકી હશે. तो इफ यू हैड स्टडीड हार्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वाला होगा. एक कंडीशनल सेंटेंस है, टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस है. वो हम कंडीशनल सेंटेंस टाइप 0, 1, 2 और 3 चारों टाइप के होते हैं. और टाइप 3 वाले देखेंगे तब आपको और पता चलेगा कि साथ में यहाँ सब में परफेक्ट पास्ट टेंस ही क्यों है. कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 में
परफेक्ट पास्ट टेंस के साथ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो सकता है और कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो सकता है. कंडीशनल सेंटेंस के लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे वो. પણ અત્યારે એટલું યાદ રાખવાનું કે કંડિશનલ સેન્ટેન્સ ટાઈપ 3 એટલે if સાથે પહેલા ક્લોઝમાં હશે પરફેક્ટ પાસ્ટ ટેન્સ અને સાથે would have પ્લસ થર્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ. તો if you had studied hard, જો તમે સખત મહેનત કરી હોત, કરી ચૂક્યા હોત, તો you would have become a doctor, તમે ડોક્ટર બની ગયા હોત. if I had been the PM of India, be का थर्ड फॉर्म है been, head के पास हेड के बाद ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है. तो इफ आई हैड बीन द पीएम ऑफ इंडिया, जो हूँ इंडिया नो प्राइम मिनिस्टर होत, तो आई वुड हैव शोन यू माय एबिलिटी, हूँ तमने मारी क्षमता देखाड़ी देत. आई वुड हैव शोन यू माय एबिलिटी, हूँ तमने मारी कैपेबिलिटी या तो एबिलिटी देखाड़ी देत. इफ आई हैड गॉन देयर, हूँ जो हूँ त्या गयो होत, तो आई वुड हैव मेट हिम, तो हूँ तेने मळ्यो होत. अब यहाँ मળી શક્યો હોત એવું બોલવા માટે जिसको भी डाउट है वुड कहाँ यूज करे, कुड कहाँ यूज करे, तो खाली હું એને મળ્યો હોત એવું કહેવા માટે I would have met him. પણ તમારે કેવું છે જો હું ત્યાં ગયો હોત તો હું એને મળી શક્યો હોત, તો I could have met him. could can मतलब कोई हो सकता है, एबिलिटी શકું, પણ પાસ્ટ માં can નું could થઈ જશે, તો I could have met him, હું એને મળી શક્યો હોત. પણ ખાલી તમે કહો છો જો હું ત્યાં ગયો હોત તો હું એને મળ્યો હોત, તો I would have met him, હું એને મળ્યો હોત. પણ મેં મળી શક્યો હોત તો I could have met him. if I had been there, જો હું ત્યાં હોત તો અહીંયા could આવશે. I could have help मतलब I would have helped him, but I would have helped him यूज करो तो હું મેં એને મદદ કરી હોત. પણ I could have helped him यूज करो तो મેં એને મદદ કરી શક્યો હોત. could मतलब કરી શક્યો હોત. तो ये डिफरेंस है would और could में, सिर्फ सिंपल कि I would have helped him, मैं એને મદદ કરી હોત. I could have helped him, मैं એને મદદ કરી શક્યો હોત. નો, તો it is up to you કે તમે કયા કોન્ટેક્સ્ટ માં બોલવું છે. અગર તમારે એ કોન્ટેક્સ્ટ માં બોલવું છે કે હું એને મદદ કરી શક્યો હોત, તો you can use I could have helped him. or if you want to say just કે मैं એને મદદ કરી હોત, તો you say I would have helped him. if you have helped him, જો તમે એની મદદ કરી હોત તો he would have passed the exam, એ એક્ઝામ પાસ કરી ચૂક્યો હોત, એને એક્ઝામ પાસ કરી લીધી હોત. પણ જો તમે એને મદદ કરી હોત તો એ એક્ઝામ પાસ કરી શકેત, मतलब કરી શકેત, શકું, તો he could have passed the exam. ये छोटा सा डिफरेंस है. if the doctor had arrived on time, जो डॉक्टर समयसर આવી ગયા હોત તો the patient would not have died, patient મરા નહીં હોતા, मतलब पेशेंट एक्सपायर થયું ન હોત. જો તમે સમયસર આવી, ડોક્ટર સમયસર આવી ગયા હોત તો પેશન્ટ મર્યું ન હોત. તો એ हो गया परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी. ओके, डिफरेंस बिटवीन शुड कुड वुड हमने कल देखा था. ही शुड हैव बॉट द कार, इट वाज ऑन ऑफर, એ કાર ખરીદી લેવી જોઈતી હતી. શુડ मतलब સલાહ જ આવશે હંમેશા, સલાહ કે એને કાર ખરીદી લેવી જોઈતી હતી, એને કાર ખરીદવી જોઈએ. he should buy a car, सिर्फ इतना बोलू कि એને કાર ખરીદવી જોઈએ તો he should buy a car. પણ પાસ્ટ માં બોલું છું કે એને કાર ખરીદી લેવી જોઈતી હતી તો he should have bought a car. કેમ? it was on offer, એ ઓફર માં હતી. તો રિગ્રેટ है કે નહીં ખરીદી, और साथ में एडवाइस भी है, સલાહ है કે એને તો આપણે should ત્યારે જ યુઝ કરીએ જ્યારે સલાહ આપીએ કે એને કાર ખરીદી લેવી જોઈતી હતી. એને શું ખબર પડે, આ ઓફર માં હતી તો ખરીદી ન લેવાય, તો આપણે સલાહ આપી. અને સાથે સાથે એને રિગ્રેટ્સ પણ હશે કે ન ખરીદી, એટલે he should have bought a car, it was on offer, તો એડવાઇસ हो गया यहाँ. he could have bought the car, એને એ કાર ખરીદી શકતો હતો. જો he should have bought the car, એને ખરીદી લેવી જોઈતી હતી, એ ખરીદી શકતો હતો. he could have bought the car but he didn't buy, પરંતુ એને ખરીદી નહીં. અને ત્રીજું, he would have bought the car, એ કાર ખરીદી લેત, but he had no money, પરંતુ એની પાસે પૈસા ન હતા. એટલે આ રીઝન આવ્યું. અને એ સાથે રિગ્રેટ પણ છે કે મારી પાસે પૈસા નહોતા, નહીતર હું કાર ખરીદી લેત. तो ये शुड वुड और कुड का डिफरेंस है. ओके, ये हम ये देख लेते हैं. होमवर्क का कल आपको जो दिया था वो क्या होगा. आई ब्लैंक हैव गॉन टू द यूएसए बट आई डिड नॉट गेट वीजा. यस, किसी को अनम्यूट करिए, क्या होगा इसमें ब्लैंक में.
Yes, Deepak. या दीपक? Deepak Rajaguru. आज अगर आपके पास टाइम है तो हम 5 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे। यस दीपक, थोड़ा जल्दी करना, मेरे पास टाइम कम है। Mayank Kalsaria. यस मयंक। Mayank can't unmute, so we ask to Srija. Yes, Srija. यस श्रीजा। Shweta Patel. श्वेता। would sir. હા, વુડ કેમ આવશે? Because regret બતાવે છે. Yes, because it shows the regrets or some reason. Reason, regret, दोनों Yes. reason है, regret है કે he did not get visa, or reason है કે એને visa મળ્યા નહીં, એટલે would આવશે. I would have gone to the USA. હું USA જઈ ચૂક્યો હોત, મતલબ હું USA જાત, પણ મને વિઝા મળ્યા નહીં. I blank, હા મને વિઝા મળ્યા નહીં, મતલબ વિઝા મળ્યા ન હતા. I blank have completed the project, but I went for the movie. પરંતુ હું મૂવી જોવા જતો રહ્યો. મૂવી જોવા જતો રહ્યો ચોઈસ થી ગયા છે કે કોઈ રીઝન થી ગયા હોય કે સલાહ છે? તો ડેફિનેટલી મૂવી જોવા તો ચોઈસ થી જતા રહ્યા હોય કે એની ચોઈસ હતી મૂવી જોવા જવાની, એટલે મૂવી જોવા જતા રહ્યા. તો ચોઈસ જ્યારે હોય ત્યારે કુડ, તો I could have completed the project. હું પ્રોજેક્ટ કમ્પ્લીટ કરી શકતો હતો, પણ હું મૂવી જોવા જતો રહ્યો. થર્ડ વન છે he blank have married her. She was a perfect girl for him. તેણી તેના માટે પરફેક્ટ છોકરી હતી. તો she should have married her. એ કે એણે સલાહ આપી કે તમારે એની સાથે મેરેજ, તેણીની સાથે મેરેજ કરી લેવા જોઈતા હતા, કેમ કે તેણી તેના માટે પરફેક્ટ છોકરી હતી. તો he should have married her. એણે તેની સાથે મેરેજ કરી લેવા જોઈતા હતા. I blank have paid you, but I had to pay 2 months rent in advance. I had to मतलब मुझे कुछ करना पड़ता था. Have to मतलब करना पड़ता है. had to का मतलब करना पड़ता था. I had to मुझे क्या करना पड़ता था? Pay 2 months rent in advance. 2 महीने का रेंट एडवांस में पे करना पड़ा था. तो ये चॉइस है या तो कोई रीजन है, ऑब्वियस रीजन है, तो इसलिए ये वुड होगा. आई वुड हैव पेड, હું તને પેડ કરી દેત, હું તમને પેડ કરી દેત, પરંતુ મારે 2 મહિનાનું રેન્ટ એડવાન્સમાં પેડ કરવું પડ્યું હતું. he have scored good mark, but he didn't study hard. એણે હાર્ડ વર્ક કર્યું નહીં, તો એના ચોઈસ થી હતું ને. he didn't study hard, તો could આવશે. he could have scored good mark, કે એ સારા માર્ક લાવી શકતો હતો, પરંતુ એણે સખત મહેનત કરી નહીં. લાસ્ટ, I blank have chosen commerce stream. Science is too difficult for me. સાયન્સ મારા માટે ઘણું અઘરું હતું. તો I should have chosen commerce. ये क्या हो गया? ये एडवाइस हो गई कि मारे कॉमर्स स्ट्रीम पसंद करवी जोईती हती. मारे कॉमर्स स्ट्रीम पसंद करवी जोईती हती. केम? साइंस इज टू डिफिकल्ट फॉर मी. साइंस मारा माटे बहु डिफिकल्ट छे, अघरू छे. तो एडवाइस और थोड़ा रिग्रेट भी हो गया. एडवाइस प्लस रिग्रेट એટલે should. I should have chosen commerce stream. Science is too difficult for me. ओके, ये सेंटेंस है હું માર્કેટમાં જઈ શક્યો હોત પણ ન ગયો. તો ચોઈસ જઈ શક્યો હોત, શકું મતલબ could. હું માર્કેટમાં જઈ શક્યો હોત તો I could have gone to the market. could plus have plus third form of verb. તો I could have gone to the market but I did not. પરંતુ હું ગયો નહીં. તો એ ચોઈસ થી નથી ગયો, જઈ શકતો હતો એટલે could use થશે કે I could have gone to the market but I didn't. હું તમને એક સવાલ પૂછવા માંગીશ, તો હું તમને એક સવાલ પૂછીશ તો I will ask you a question. પણ હું તમને એક સવાલ પૂછવા માંગીશ તો I would like to ask you a question. देखो ये डिफरेंस है. હું તમને સવાલ પૂછવા માંગીશ તો I would like to ask you a question, અને હું તમને એક સવાલ પૂછીશ તો I will ask you a question. મહેરબાની કરીને તમે શાંત રહેશો? તો would you please keep quiet? would you please be quiet? keep quiet या तो be quiet. तो ये
आपको रिक्वेस्ट की है, वुड से रिक्वेस्ट की है कि શું તમે શાંત રહેશો, तो वुड यू प्लीज. अगर आपको और પોલાઇટનેસ से रिक्वेस्ट करनी है तो कुड यू प्लीज बी क्वाइट, શું તમે મહેરબાની કરીને શાંત રહેશો, तो वुड यू प्लीज बी क्वाइट. શું તમે મારી સાથે લોંગ ડ્રાઈવ પર જવા માંગશો, तो ये क्या हो गया, ऑफर किया. ये रिक्वेस्ट था वुड के साथ, ये ऑफर किया कि लॉन्ग ड्राइव पर जवा मांगशो, શું ऑफर કર્યું, મારી સાથે લોંગ ડ્રાઈવ પર જવા માંગશો એ. તો would you please go on long drive with me, શું તમે મારી સાથે લોંગ ડ્રાઈવ પર જવા માંગશો. અમે રોજે ક્રિકેટ રમતા હતા. પાસ્ટમાં થતી ક્રિયા, પાસ્ટમાં થતી હેબિટ, એને દર્શાવવા માટે શું યુઝ થાય, would. પાસ્ટની હેબિટ છે કે અમે રોજે ક્રિકેટ રમતા હતા, તો we would play cricket daily, અમે રોજે ક્રિકેટ રમતા હતા. વિરાટ કોહલીએ રમી લીધું હશે, વિરાટ કોહલીએ રમી લીધું હશે, તો વિરાટ કોહલી would have played, એને રમી લીધું હશે. રાજેશે રાધિકાની મદદ કરવી જોઈતી હતી, તો રાજેશ કરવી જોઈતી હતી. જો રાજેશ છે રાધિકાની મદદ કરવી જોઈએ તો રાધેશ should help રાધિકા. રાજેશે રાધિકાની મદદ કરવી જોઈએ, પણ અહીંયા છે રાજેશે રાધિકાની મદદ કરવી જોઈતી હતી, તો રાજેશ should have helped રાધિકા. मॉडल परफेक्ट हो जाए, एक्शन कंप्लीट हो चुकी है, करवी जोईती हती. पास्ट नी बात छे, कंप्लीट एक्शन नी बात छे कि एने मदद करवी जोईती हती, तो शुड हैव हेल्प राधिका. जो मैं ट्रेन पकड़ी लीधी होत तो मुंबई गयो होत, अने जो मैं ट्रेन पकड़ी लीधी होत तो मुंबई जई शक्यो होत. फिर से ये देखो, हूँ मुंबई गयो होत, आई वुड हैव गॉन टू मुंबई, एंड हूँ मुंबई जई शक्यो होत, आई कुड हैव गॉन टू द मुंबई. जो मैं ट्रेन पकड़ी लीधी होत, इफ आई हैड कैच द कैन, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 का है सेंटेंस है, परफेक्ट पास्ट टेंस के साथ वुड हैव प्लस या तो कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा. तो इफ जो मैं ट्रेन पकड़ी लीधी होत, इफ आई हैड कैच द ट्रेन, जो मैं ट्रेन पकड़ी लीधी होत तो मुंबई गयो होत, आई वुड हैव गॉन टू मुंबई, तो हूँ मुंबई गयो होत. जो मैं ट्रेन पकड़ी लीधी होत, इफ आई हैड कैच द ट्रेन, तो मुंबई जई शक्यो होत, तो आई कुड हैव गॉन टू द मुंबई, तो हूँ मुंबई जई शक्यो होत. शक्यो होत तो कुड, मुंबई गयो होत तो वुड. मारे मुंबई जवू जोईतुं हतुं, मारे मुंबई जवू जोईतुं हतुं, तो आई शुड गो टू द मुंबई, सॉरी आई शुड गो टू द मुंबई, तो मारे मुंबई जवू जोईए. बट मुंबई जवू जोईतुं हतुं, तो आई शुड हैव गॉन टू मुंबई. देखो यहाँ हूँ मुंबई गयो हतो तो आई वुड हैव गॉन टू मुंबई, हूँ मुंबई जई शक्यो होत तो आई वुड हैव गॉन टू मुंबई, अने मारे मुंबई जवू जोईतुं हतुं तो आई शुड हैव गॉन टू मुंबई. ये डिफरेंस हो गया वुड, शुड और कुड का. अभी कितना टाइम हो गया, ओके, ऑलमोस्ट वी हैव 1 मिनट अहेड ऑफ द टाइम, 50 मिनट से 1 मिनट आगे निकल चुके हैं. सो लेट्स कंप्लीट द क्लास. अगर अभी भी आपको कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट कॉल करके मुझे पूछ सकते हो. यस, टुडे मैं बता रहा हूँ वही, आप अपने कोच को या डायरेक्ट मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हो. आप आज का होमवर्क यही है कि आपको ये जो शुड, कुड और वुड का लेक्चर है वो 2 बार यूट्यूब पर देखना है. वो आज का होमवर्क है, कुछ लिखना नहीं है. अगर आप 2 बार देख लेते हो तब आप अपने ग्रुप में लिखोगे डन, सिर्फ इतना लिखोगे तो आपका होमवर्क आपने कर दिया, वो मार्क हो जाएगा. अगर आप नहीं लिखोगे मतलब आपका होमवर्क नहीं हुआ है. तो आपको देखना है, और आपको इसलिए देखना है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको लगता है यहाँ आप 40 मिनट 50 मिनट आओगे और आप सीख जाओगे, ऐसा नहीं होगा. प्रैक्टिस से ही आपको और ज्यादा समझ में आएगा और अच्छी तरह से आप बोल पाओगे. तो इसीलिए आपको 2 बार ये सब लेक्चर देखना है. कल की छुट्टी है इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा है ये होमवर्क. आप कम मत समझिए, लिखना नहीं है, इसलिए 2 बार सब वुड, शुड और कुड का लेक्चर देखना है आपको. वो होमवर्क है, अगर आप कर देते हो तो ग्रुप में डन लिख देना है. और आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप कोई भी टाइम पे मुझे पूछ सकते हो. ओके अजय, लेट्स अनम्यूट ऑल एंड इट्स टाइम टू से बाय बाय. Bye. 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 Thank you. Have a happy weekend. Bye bye.